All right. So today we are going to look at carbon 13 NMR, and not just that, we're going to look at some practice problems from past papers for NMR, and that can be for both the proton and the carbon Hello. 13 NMR. A couple of advantages that carbon 13 NMR shows that, for example, in carbon, the most abundant isotope is carbon 12, and that is doesn't show on the NMR. Does anybody know why that is? Why doesn't it show on the NMR? So things that actually show in the NMR are the ones that have odd number of spins. This has even number of nucleons, so there's not going to be it's not going to show on the NMR. But if I switch it with carbon 13, now it has odd number of spin, and because of that, it will show up. Uh, Similarly, this one will be really, really simple because it will only show singlets. Usually it only shows singlets. Okay. So it really simplifies the whole NMR. Okay. The disadvantage is that in proton NMR, the height or the intensity was dependent on the number of hydrogens that you have. But yahan pe we can't determine the number of carbons from the the carbon 13 NMR. These are just some facts that you should know before you do it. Okay? Because agar ethanol hai, oh sorry, ethanol mein 2 carbons hain. They are both carbons, right? So they won't show us differently कि भाई alcohol वाला carbon और दूसरे वाला carbon carbon है, ठीक है? So वो एक उनकी absorbance उस तरह की थोड़ी सी different हो जाती है. खैर, we'll look at some examples और आपको समझ आ जाएगी. So the peaks that we see here, just like proton and NMR, every peak will correspond to a different environment. Okay? और हमें उन environments of carbon को अब देखना है. ठीक है? So let's see. Let's take a simple example. I have this thing. Okay, let's look at these. How many different environments do I have? One is carbon with 3 hydrogen. That is this one and this one. One is carbon with 2 hydrogens. That's this one and this one. But also this is attached to 2 carbons. So secondary carbon that is attached to a methyl on one side and a different carbon on the other side. वो दो ही है मेरे पास. And the third environment that I have is of the middle carbon. So मेरे पास 3 different environments हैं. Let me change this up a little bit. Let me get an isomer of this. अच्छा, अब इसमें environment को gauge कर. You might think that the environment of this carbon and this carbon is the same. But that's not true. Because this is attached to a tertiary carbon and this is attached to a secondary carbon. So as far as carbon is concerned, iska structure thoda sa different ho gaya. Sir, Yeah. what is a tertiary carbon? Like what third वाला carbon आएगा उसके A साथ? carbon attached to 3 different carbons. So for example, this carbon is attached to 1, 2, 3 different carbons. So it's a tertiary carbon. So one environment that I have is this one and this one because they're both attached to a tertiary carbon. This one is a tertiary carbon, so iska ek apna environment hai. This one is attached to a tertiary carbon and a secondary carbon. And then I have this one, which is attached to a secondary carbon only and a hydrogen on the other side. So in मेरे पास different environments होगा. Let me get another isomer. Let's say I have, how many environments do I have now? Let's see. One is this one. It's a quaternary carbon. Quaternary carbon means it's attached to 4 different carbons. And then I have this one, which is attached to a quaternary carbon and hydrogen. And turns out this is also the same, this is also the same, this is also the same. So I just have 2 different environments. Sir, Yeah. the ones that are the same, they're attached to like the secondary carbon हम उसे पे कहेंगे या फिर हम उसे like quaternary ही कहेंगे?
So this is a quaternary carbon, and this is attached Yes. to hydrogen and quaternary carbon. Okay. So that's the main idea of how we identify them. And now we're just going to do some practice problems. So can you tell me how many environments I have in this? 2. Two. Yes. These two have the same environment, and the ones on the right and left have the same environment. Okay. How about now? So will it be 2? Why? क्योंकि CH2 है सारे like in the sense के like you get what I mean, like ऊपर नीचे and then OH का different है, so like इसलिए 2. सोच लें. 3. Do you agree with it, Ayan? Do you agree that there are 3 environments? सर मैं तो वैसे ही 3 कह रही हूँ, मुझे नहीं पता. It's okay. कोई बात नहीं. What do you think? How many environments are there? I think there are 2. Which ones? The one with OH and the others? Yes. जी सर. हाँ, what do you think? सर अभी तो आइडिया नहीं मुझे. देखो, all you have to see is कि ये कार्बन इसके साथ वाले कार्बन्स आइडेंटिकल हैं या डिफरेंट हैं. मतलब वो और तरह बिहेव करेंगे या इस तरह. Let me give an example. यहां पर लेट्स सी, एक तो ये कार्बन है ना, इसके साथ OH लगा हुआ है, तो इसका तो एनवायरनमेंट डेफिनेटली डिफरेंट है, और किसी के साथ OH नहीं लगा हुआ. ठीक है. बट अगर मैं इस कार्बन को देखूं तो ये कार्बन OH वाले कार्बन से ज्वाइंट है और एक बगैर OH वाले कार्बन से ज्वाइंट है. ठीक है. और इन अदर वर्ड्स, this is attached to directly to the OH carbon, and it is attached to a carbon that is not attached there. Yeah, 4 steps away from. Similarly, ये वाला carbon भी, on one side it has the OH wala, and on the other side it has a carbon that is 4 steps away from OH. So directly with OH and 4 steps away with OH. So ये हमारे पास ये environment different हो गया. फिर हमारे पास ये carbon है, इसके 2 स्टेप्स अवे OH है और दूसरी साइड पे 4 स्टेप्स अवे OH है. एंड दैट इज द केस विद दिस वन एज वेल, क्योंकि इसके 2 स्टेप्स अवे OH है और 4 स्टेप्स अवे OH है. एंड देन वी हैव दिस वन which is 3 steps from OH on each side. So we actually have A, B, C, D, 4 different environments of carbon. Pet, let's do some partial questions. समझ आ जाएगी, don't worry. सारे के like वो जो सिर्फ होते हैं. Like जो भी, there's 2 options of splitting. So आपको वो उनको draw करना आना चाहिए. मतलब 4 की shape एक जैसी होती है और एक की shape different होती है, तो उनको draw करना आना चाहिए. Okay, thank you. Sir, लेकिन syllabus only mentions 2. No, that's for splitting. Shape wait. of d orbital, तो वो 4 की और 1 की different होती है. It says कि like we only need to know dxy की D- और dz dxy, square की. and that is because xy, yz, xz, x square minus y square सबकी shape एक जैसी होती है और z square की different होती है. So technically you're supposed to know how to draw 5 of them. Oh, ठीक है, thank you. The proton NMR spectrum of neramexane in CDCl3 अच्छा, shows 5 peaks with the following chemical shifts. CDCl3 तो हमने उसमें add किया है ना. I'll need to look at the structure of neramexane. ये neramexane है, sorry. Okay, so we have a singlet. Singlet क्यों होगी? क्योंकि उसके साथ वाले कार्बन पे 0 हाइड्रोजन है. Let me revise it for you a little bit. The number of protons, which is also called the height or the density, tells me how many of the protons have the same environment. ठीक है? तो उनको मैं जब पढ़ा रहा था, I used to call them adjacent. So अगर मेरे पास CH3 था तो मैंने आपसे कहा था कि 3 adjacent हैं. तो ये 3 का मतलब है कि कोई 3 ऐसे हैं जो adjacent हैं. जैसे यहाँ पे आप देखो 1.2 पे CH3 का मतलब है there are 3 protons, 3 hydrogens with the same environment.
बट 2 का मतलब क्या है कि दो ऐसे हैं जिनका सेम एनवायरनमेंट है. दे कुड बी दीज और दे कुड बी दीज. हमें वैल्यू टेबल से पता चलेगी. और दे कुड आल्सो बी दिस. सिमिलरली जो ये चीज थी स्प्लिटिंग वाज द नेबरिंग हाइड्रोजन्स, कि मतलब साथ वाले कार्बन के कितने हाइड्रोजन हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास इसको मैं देखूं तो इसके साथ वाले कार्बन पे कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो इसकी स्प्लिटिंग नहीं होगी, इसका सिंगलेट होगा. बट अगर मैं इसको देखता हूं, लेट्स से इसको देखता हूं, अच्छा इसकी भी नहीं होगी बाय द वे. लेट्स से किसकी एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे तो weird. Okay, let me try another one. Let's say this one. अब इसमें अगर मैं इस हाइड्रोजन को देखूं तो इस हाइड्रोजन के नेबरिंग में 2 हाइड्रोजन है. सो इसकी स्प्लिटिंग होगी ट्रिपलेट. सो ये इसकी तीनों की ट्रिपलेट की स्प्लिटिंग होगी. सिमिलरली इस हाइड्रोजन के नेबर में 3 हाइड्रोजन है, तो इसकी क्वार्टेट बनेगी, या मल्टीप्लेट भी बोलते हैं उसको. तो इसकी और इसकी क्वार्टेट बनेगी. लेकिन इसके नेबर में कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो इसकी सिंगलेट बनेगी. सो दैट इज हाउ यू आर एबल टू आइडेंटिफाई द splitting. So splitting depends on neighbors and this depends on the adjacent. So let's see how many do we have at 0.9. 0.9 का मतलब है कि I'll need to look at the table. Out of these 5 देख लेते हैं ना, उसने हमारा काम आसान कर दिया हुआ है. ये वाला होगा, I think यही वाला होगा. Let me confirm again. Okay, so proton NMR में yeah, it is an alkene. 0.9 पे clearly alkene है. So how many alkenes do I have? ये और कौन सा? इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है, ये दोनों इधर ही हैं. तो ये 3 और ये 3, तो ये 6 हो जाएंगे. बट ये 3 और ये 3 भी हैं, तो ये 12 हो जाने चाहिए. बट CdCl3 में उसने ऐड किया है, दिस शुड बी 12, क्योंकि देखो ना CH3 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 all of them have the same environment because they are all CH3, 3 adjacent carbons attached to 0 neighboring carbons. Okay, let's try another one. 1.2, वो 1.2 ये उसने बता दिया है. अब सिंगलेट है ट्रिपलेट है, लेट्स सी. 1.2 पे इसके adjacent carbon पे कोई हाइड्रोजन नहीं है, so this is going to be singlet. Okay, 1.4 is 2. 1.4, that will also be a alkyl group, so CH3 CH2 या CH. so 2 हाइड्रोजन तो मतलब CH2 है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है. 1.4 वाला कौन सा है, ये है या ये है? Let's see. So the CH2 attached to another carbon with nitrogen and the one that's without it. I can't decide at the moment whether it's this or this, but let's move on. 4 carbons with 1.7. अब 1.7 पे ना 2 हो सकते हैं, एक alkyl वाला हो सकता है, मतलब ये भी हो सकता है, और 1.7 पे NH वाला भी हो सकता है, ये वाला भी हो सकता है. अब लेट्स सी कि 4 कार्बन्स इसको रिस्पॉन्ड करेंगे, 4 हाइड्रोजन इसको रिस्पॉन्ड करेंगे, या 2 हाइड्रोजन इसको रिस्पॉन्ड करेंगे. लेट्स सी. सो NH2 के साथ वाले कार्बन पे इधर 2 हैं और इधर भी 2 हैं. सो दैट इज गोइंग टू बी द 4 कार्बन थिंग. ठीक है, सो ये 1.4 वाला है और ये 1.2 वाला है. सॉरी, ये 1.4 वाला है और ये 1.7 वाला है. Clear? Do you get it? The 1.4 thing is because of 2 carbons or 2 hydrogens, and those 2 hydrogens could either be this one or this one, but ये environment share कर रहा है इसके साथ, और ये दोनों 4 carbons हैं जो कि यहाँ पे है, लेकिन ये यूनिक है, ये सिर्फ 2 carbons ऐसा शो कर रहे हैं. So इसका मतलब है ये 2 वाला होगा. ये हम ऑलरेडी बता चुके हैं, ये 0.9 वाला होगा. तो पीछे बचा ये 2.2 वाला होगा. अच्छा, अब लेट्स लुक एट द स्प्लिटिंग. दिस वन is attached to carbons with no
hydrogen, no adjacent, so ये भी singlet होगा. 4. This one is attached to carbons with no hydrogen, so ये भी singlet होगा. Clear, everyone? Sir, Yes. how are 2.2 protons responsible? Like 0.2 क्या मतलब? Oh, my bad. I needed to put it there. मैंने यहाँ पे 2.2 लिखना था. Oh, okay. हाँ. And sir, how do we differentiate between a broad singlet and just a singlet? So a singlet is like this and a broad singlet is like this. Sir, ये क्या है? Like ये or ये. Oh, okay, sir. Got it. Yeah. Sir, broad singlet हमेशा like NH2 वाले like type molecules का होता है. Usually जो बहुत ज्यादा polar bonds होती है ना उनमें होता है ऐसा. One of the peaks in the protons disappears when the sample is shaken with D2O. मतलब वो hydrogen को replace कर रहा है and that usually happens in more polar bonds. So इसका मतलब है कि वो NH2 वाली जो है इसमें वो hydrogen displace हो जाएगा. So it's the one with NH2. कोई और NH वाली है? यही है. ठीक है. So that's the one that is why it disappears, because it gets exchanged with D2O. Okay. सही है. So Basically, will this be because D2O is more stable than NH2? I've never really thought about it, that why exactly do they switch. I'll think about it. So basically, this will make ND2 and H2O, but वो आपको बताने की ऐसा I don't think जरूरत है. या भी क्वेश्चन लिख देना या वैसे बता देना. Okay, state the use of TMS. TMS is what? The what you call the reference value. जो हमारा 0 होता है ना, so it gives us the reference value for reference value. And CdCl3 is what we dissolve it in. So it's the solvent. So that's like a fact that we have to know. Okay, let's see. The NMR spectrum of compound this is shown by considering both the relative peak areas and their delta value. Use the data booklet to deduce the part of the molecule that produces the peak at 2.2. 2.2 पे 3 carbons हैं, 3 hydrogens हैं. Why am I saying carbons? 3 hydrogens हैं which are sharing this. अब 2.2 में range में जाता हूँ. 3 carbon वाली मेरे पास एक option है CH3C00. CH3C double bond O. 2.2 पे मेरे पास that's the only option I have with 3 carbons. 3 hydrogens. Okay, deduce the part of the molecule that produces the peak at 1.2 and 3.5. 1.2 pe I have 3 with the splitting of 3 as well. That means it is 3 protons attached to 2 protons. उसके neighbor में 2 proton है. So CH3 होगा और neighbor में 2 proton होंगे, but आगे क्या है अभी देखते हैं. The range is Sir? 1.2. Yes. So for the first part, I get the CH3, but like, how do we know कि C double bond O होगा? नहीं, मुझे नहीं पता था. मुझे ये पता था कि CH3 है और कार्बन के साथ प्रोटॉन नहीं है because it's a singlet. Then I looked in the data booklet और उसमें मेरे पास लिखा हुआ है the second range is 2.2 to 3 for this one. मतलब डेटा बुकलेट में ना उसने 2.2 पे मुझे 3-4 ऑप्शंस दी हुई हैं, but only one of them has 3 carbons, 3 hydrogens. Makes sense. ठीक है. Okay. Now similarly in this one 1.2 पे मेरे पास 3 hydrogens adjacent है with 2 neighboring. Why? Because this is a triplet. So वो मैंने यहाँ से figure out किया है. But इसके आगे अभी मैं देखूंगा कि इस 1.2 की रेंज में मेरे पास क्या क्या आता है. 1.2 की रेंज में there's nothing in the data booklet that might help me. So I'm just going to put it here for a while. Maybe this will help. 3.5 को देखते हैं. 3.5 पे I have a 2 hydrogen thing with 3 hydrogen neighbors. So that's clearly this 2 having 3 neighbors, but 3.5 किसकी range में आती है? Okay, so if you look in the
एग्जाम्पल तो वो कहते हैं कि CH3O, CH2O and CH2Cl, these are options for 3.5 की range. Now I have 2 hydrogens there, तो मैं इन दोनों को कंसिडर करूंगा, इसको इग्नोर कर दूंगा. But then I don't have Cl in the formula, so मेरे पास यही बचता है. So this is gonna be this. Sir, I didn't get this. अगर हम ये नहीं कहेंगे कि like it has 2 hydrogens और फिर like इसके neighbor will be 2 या 3. देखो हाइट से पता लगेगा इस पे कितने हाइड्रोजन. दिस कार्बन हैज 2 हाइड्रोजन. Yeah. सही है. Yeah. तो ये वाला नहीं हो सकता. और द स्प्लिटिंग इज 4, दैट मींस नेबर में 3 हाइड्रोजन है. तो वो तो हम ऑलरेडी एस्टैब्लिश कर चुके हैं. Oh, ठीक है. और शिफ्ट मेरे पास है 3.5 की, तो 3.5 की शिफ्ट में ये 2 बनते हैं जिसपे 2 हाइड्रोजन है. समझ आ गया. बट इनमें से मैं इसको रिजेक्ट करूंगा क्योंकि मेरे पास ऑप्शन नहीं है इसकी. सो हर स्प्लिटिंग में हर पीक के लिए आपने 4 चीजें देखनी होती हैं. द शिफ्ट, द एडजेसेंट, द नेबर एंड द पॉसिबल फ्रॉम द फॉर्मूला. शिफ्ट आपको ग्राफ से पता चल गई, एडजेसेंट आपको हाइट से पता चल गए या जिसको हम डेंसिटी भी बोलते हैं, नेबर आपको पता चल गया स्प्लिटिंग से, और फॉर्मूला से आपको पता लग गया कि ऑक्सीजन है, क्लोरीन नहीं है. सो हमेशा आपने स्प्लिटिंग, एडजेसेंट, नेबर एंड देन फॉर्मूला देखना है. लेट्स लुक एट द नेक्स्ट वन. Do you use the part that produces the peak at delta equal to 4? तो delta equal to 4 में मेरे पास काफी ऑप्शन है. मेरे पास CH3O है, CH2O है, CH2Cl है, ठीक है, और मेरे पास 4 में कोई और ऑप्शन है, ROH भी है, और कोई 4 में ऑप्शन NH भी है, बट NH मेरे पास है नहीं यहाँ पे. तो these are possibility. ये नहीं हो सकता क्योंकि OH है. अब मैं देखता हूँ. Will it be CH2O? लेट्स सी. अब साथ ही साथ मैं ये भी देख रहा हूं कि हाइट इज 2, एडजेसेंट हाइड्रोजन 2 हैं, तो मुझे लगता है कि ये वाला हो सकता है, ये दोनों नहीं होंगे. लेकिन ये वाला तो ऑलरेडी मुझे नजर आ रहा है, CH2O है, तो व्हाई इज इट हियर? द रीजन इज इट इज अ सिंगलेट, स्प्लिटिंग 0 है. इसका मतलब है नेबर 0 है. तो इसका मतलब है इसके नेबर में कोई हाइड्रोजन नहीं है. सो ये मेरे पास प्रॉबेबली कौन सा हो सकता है? क्लियरली CH2O है, बट साथ में क्या है? नेबर में कोई कार्बन नहीं है. इसका कोई नेबर चाहिए हमें. इसके बारे में कुछ और पता है हमें? We don't know. Maybe there is some extra information in the question के किसी और पार्ट में जिससे हमें पता लगे कि इसमें कोई और फंक्शन ग्रुप है. मे बी कोई टेस्ट उसने किया हो. NMR is not telling me anything at the moment. This is incomplete, people. I need more information to fix this. When reacted with aqueous alkaline iodine, X produces a yellow precipitate. ये aqueous iodine वाला reaction किधर होता था? Do you recall? Iodoform reaction है ये. Iodoform reaction happens when you have a carbonyl next to a methyl. You have a carbonyl next to a methyl. तो इसका मतलब है कि यहां पे suggest a structure of X. इसमें carbonyl है which is next to a methyl. ये part इसमें है. ये मुझे यहां से पता चल रहा है. X produces a yellow precipitate. X में टोटल क्या है? C5H10O2. Now let's bring it all together.
I know that it has this whole thing. It has this whole thing. Oh, wait a minute. ये हमारे पास है तो सही यहाँ से आया. Oh, okay. Let me put it together. Guys, pay attention. This CH2O may be attached to this CO. So let me break it down. So basically हो क्या रहा है? I have a jigsaw puzzle here. मेरे पास एक पीस ये है, एक पीस ये है, एक पीस ये है. क्योंकि clearly आप देखो 1 2 3 4 5 कार्बन्स मेरे पास हैं और 2 ऑक्सीजन मेरे पास हैं. ठीक है? तो मुझे अब इस जिक्सॉ पजल को कंबाइन करना है. लेट मी स्टार्ट विद द फर्स्ट वन. CH3CO इसने बना दिया होगा आयोडोफॉर्म. फिर इसी के साथ ये भी अटैच हुआ होगा. क्यों? क्योंकि एडजेसेंट पे कोई वो नहीं था, हाइड्रोजन, कोई स्प्लिटिंग नहीं थी 4 वाले की. तो इसका मतलब है ये CH2O was next to this one because उसकी कोई स्प्लिटिंग नहीं हुई. और फिर इसी CH2O के साथ ये पूरा भी था. So what if, because I already have 1 and 2 oxygen, I can't have another oxygen. So clearly ये CH2 CH3 इस तरह से था. So there you go. We have combined everything together and we have made the formula. Does everybody understand this? Moving on. Compound W is an ester with the molecular formula same. Proton NMR contains only 2 peaks. The relative areas are 9 to 1. इसका मतलब है कि 9 hydrogens attach in a similar way and only 1 hydrogen attached in a different way. 9 hydrogen same का मतलब ये हुआ that I have CH3 CH3 CH3. That's the only possibility I can think of जिसमें 9 hydrogen एक तरह हो. And then I have something with 2 oxygen and 1 remaining hydrogen. That's carboxylic acid. There you go. ये बन गया structure. So I'll write as CH3 3s COOH. Do you understand this? Yes, sir. Great. Compound Sir. R is shown. Yeah. सर जो पिछला पार्ट था सी का मेरे ख्याल से पार्ट, उसका सर आप जरा स्ट्रक्चर बना के दिखा सकते हैं? इसका? यस, सेकंड पार्ट. Okay, so I have the structure formula shouldn't be difficult. I'll start with the left carbon, 3 hydrogens. Next carbon, oxygen. Next carbon, 2 hydrogens. Oxygen. Next carbon. Next carbon. Yellow. ओके. State the systematic name of the compound R. Okay, so I have a phenol, right? Because OH with the ring, so it is a phenol. It has methyls and a chloro. So it's gonna be, how will I name the methyl? Doesn't matter, symmetric compound. So 3,5-dimethyl and 4-chloro. अच्छा, आप A levels में ना आप इसको कर सकते हो. Oh wait, not 4-chloro, 6-chloro. अच्छा. No, what's wrong with me? This is 4-chloro. Yeah. In A levels, you can make it 4-chloro, 3,5-dimethyl or 3,5-dimethyl and 4-chloro because it doesn't really matter. But usually if you read it written down somewhere, तो वो क्या करते हैं, functional groups are arranged in alphabetical order most of the time. Okay. Let's say somebody does not look at it as a phenol. Somebody says that it is a benzene with a hydroxy there as well. They will get mark. ठीक है? So mark मिल जाएगा. Phenol नहीं भी लिखा ना, benzene लिख दिया लेकिन साथ में hydroxy बता दिया, तो you will get a mark. Okay, R is dissolved in CdCl3. Obviously उसकी वो NMR spectrum कर रहा है. Analyze using carbon-13 and proton NMR. Okay, interesting. Predict the number of peaks seen in the carbon-13 NMR.
Let's see, how many environments do we have? Let's see. एक environment तो ये है, alcohol वाला. एक environment इन दोनों का है. एक environment ये chloro वाला है. एक environment ये दोनों का है. और एक environment इन दोनों का है. So 5. Predict the number of peaks that are seen in the proton NMR. In the proton NMR, एक तो इन दोनों का है. एक इसका है. Sir, what's the exact difference between proton and like carbon-13? So in carbon-13, you look at carbon, and in proton, you look at hydrogen. That's the main difference there. So basically carbon-13 में हम carbon के environments देखते हैं और proton में हम hydrogen के देखते हैं. Yes. And third is this one. So 3. I think we have covered all the hydrogen. Yeah, there's no other hydrogen. A separate sample of R is dissolved in D2O. ठीक है, so the more electronegative atom के साथ जो होगा या जो ज़्यादा polar bond है जैसे OH वाली है वो खत्म हो जाएगी. So one less peak that is obtained. Of course, the OH bond is gone. So explain why. So the OH is the hydrogen in OH is exchanged with D2O. So its peak disappears. Okay. The structure of butamine is shown. Proton NMR contains one or more peaks that show a triplet splitting pattern. Triplet मतलब उसके neighbor में कितने हैं? उसके neighbor में 2 हैं. Triplet का ये मतलब होता है. So let's see. I'll draw the chicken feet. So 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. I think that's it. That's all there is. Okay. So how many of them will show triplet? जिसके neighbor में 2 हैं. So ये वाला triplet होगा क्योंकि इसके neighbor में 2 हैं. और इसका environment same है. Remember. इसके साथ CH2 के साथ neighbor में 2 हैं और इसके CH2 के साथ भी neighbor में 2 हैं. तो हमारे पास 2 ही बनेंगे. एक इसकी वजह से आएगा और एक इन दोनों का मिला के आएगा. जी. On the diagram, circle the proton responsible for peaks you identified. So ये वाला और ये वाला. ठीक है. Describe and explain how the proton NMR would differ from the proton. So again, OH वाला या NH2 है हमारे पास. This one. So this one will go away. इसका एक peak होएगी तो we'll say that the peak due to NH2 disappears, ठीक है, as H is exchanged with D2O. So now you see that the patterns start to repeat. Every time you do a few questions, you will see कि questions repeat होने शुरू हो गए. अब जैसे देखो ये हमेशा एक ये question आता है, identification का question आता है, use of CDCl3 आता है. ठीक है? Thank you, sir. Okay. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Officer.